Good evening. Are you getting my voice? Yes, ma'am. Okay. So first, let's start with the skewness. I think till dispersion, there is no doubt to you people. Is there any doubt till dispersion? No, ma'am. Okay. So I'm taking the same data set of weight data, right? And we will do the skewness by theory as well as within Excel, right? Okay, let's start. Skewness. So what is skewness in the data set is skewness measures the asymmetry in the data set, right? So when you draw a frequency curve, when you have the frequency curve, right, then you have either this kind of shape or maybe more peaked. Oh, so it can be tilted to one side on the right side, or it can be more tilted toward the left side, right? So when you have this kind of curve, this is basically bell-shaped curve. So this kind of curve we called as symmetric, right? So in the symmetric curve, we have mean, mode, and median, approximately or exactly the same value. But when you have the curve more on the tailed more on the right side or left side, then we called it as asymmetric. So both these curves represent the asymmetric distribution. Right? And asymmetric is also called skewed, right? So when you have the more tail on the right, then it is called मेरी क्लास में करवाया है कोई बता सकता है? And positively skewed asymmetric curve. Hmm. It is called positively skewed, right? And when it is more tail on the left side, then it is called as negatively skewed, right? So in this case, the highest peak point represents you the model value. Okay. So next you will have the mean, right? And in this case, the highest peak value here would be your mode. Here it will be median.
it will be median, and then next will be mean. Here also you have median, then mean. Next will be maybe there's mean, right? So order is like this. In this case, mode is lesser than median, lesser than mean. That means mean is the greatest, or mean is more than mode. So if you have mean minus mode difference positive, then we called it as positively skewed. And here also, here your mean is lesser than mode. That means mean minus mode is negative. So this is negatively skewed. So by the for the method of measuring skewness, we have both absolute and relative measures of skewness. So now methods to measure skewness. For the absolute measure, we have difference of mean and mode. If this difference is positive, then it implies positive skewness. And if this difference is negative, then this implies negative skewness, right? And for the relative measure is basically we use to compare two or more data series skewness. So for relative measure, we have mean minus mode divided by standard deviation, right? And this formula was given by Carl Pearson. So it is represented by SKP. SKP is mean minus mode by sigma. Where sigma is standard deviation. And the value of this SKP lies between -1 and 1. -1 and 1. So more it close to 0, that means it is more symmetric. And if it is close to -1 or 1, then it is asymmetric. If it has the value negative, then it is negatively skewed. If it has the value positive, then it is positively skewed. Right? So one way to measure skewness is by finding the mean and mode. Now, second method is by Bole method. For Bole method, we have the quartiles, right? So absolute measure is Q3 plus Q1 minus 2 Q2, where Q2 is nothing but the median. These things I have already explained in class. I'm just repeating it because there was mistakes in the files, so you can correct it, right? And the relative measure for Bole is relative as Q3 plus Q1 minus 2 Q2 over Q3 minus Q1. And again, this coefficient value is
lies between -1 and 1. This is SKB, Bolli's coefficient. There is another measure, Kelly's measure. Kelly's measure include percentiles and deciles, but it is not in your syllabus, so I'm ignoring that. And another method is by method of moments. Right? So by method of moments, you have third moment. The formula is summation x minus x bar cube divided by n. Again, if the value is negative, then it is negatively skewed, and if the value is positive, then it is positively skewed. And the relative measure for it is given by beta 1, which is mu3 square upon mu2 cube. What is mu2 here? Mu2 is variance. Okay, so these are the formulas. Now we solve the question by using Excel. Any doubt till now? No, ma'am. Let's open Excel. So we were having the weight of students' data, right? And the values were 65, 52, 55, 43. Right? I'm just writing it. अगर आपकी कोई different values है तो आप देख लेना. 65, then 58, 65, 75, 52, 70, 65, 65, 92, 56, 63, 76, 53, 49, 55, 75, 62, 42, 65, and 82. Right? These were the values for the weight. See, for the skewness, we will try write all the methods. First method was mean minus mode, right? So first, just so this is the data, and so let's write here. So first we have to find the mean of it, right? So what is the function for the mean? It is equal average, then select the range. Right, so this is the average. Let's fix it to 1 decimal place. Right, then we need mode. What is mode here? Mode will be the value which repeats maximum number of times. So how will write the value which repeats maximum number of time?
कैसे करेंगे? इक्वल मैम इक्वल मोड. इक्वल मोड. Equal mode, okay. Function. So it is 65, right? Then you write mean minus skewness here. आप separately यहाँ पे table बना सकते हो, absolute relative. So you can write here mean minus mode, right? तो डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकते हो या फिर आप सेल रेफरेंसिंग यहाँ पे यूज कर लो. इट्स अप टू यू. तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल रही हूँ. This is the absolute measure and relative. For relative we need standard deviation. तो यहाँ पे हम standard deviation भी निकाल लेते हैं. Standard deviation equal क्या? Equal STDEV. अच्छा यहाँ पे देखो ये डॉट P आ रहा है, डॉट S आ रहा है. डॉट S is for sample and dot P is for entire population. तो यहाँ पे अगर अभी हम डॉट P यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम सैंपल स्टडी नहीं कर रहे हैं, राइट. डॉट P अगेन select the range. Then enter. So standard deviation is 11.26. Let's fix it to 2 decimal places. 27. So what is the formula? Mean minus mode divided by standard deviation. So I'm writing the mean minus mode value is this, divided by standard deviation is 11.27. एक्सक्यूज मी मैम. मैम एब्सोल्यूट में मीन माइनस मोड है, मीन की वैल्यू 62.9 है और मोड 65 है, तो मैम वो नेगेटिव में नहीं जाएगा -2.1? हाँ नेगेटिव में जाएगा. मैंने शायद पहले 65 लिख दिया है, मैंने गलत लिख दिया है. ठीक है, आप सही कह रहे हो. मैं इसको ठीक कर देती हूँ. ठीक है. So negative sign indicates it is negatively skewed. ठीक है, रिजल्ट साथ साथ लिख देते हैं. नेगेटिवली स्क्यूड है ये. See, it is minus 0.1, so it is close to 0. So it is almost symmetrical. The skewness is less. It is negatively skewed, but is not much skewed. Less skewedness है यहाँ पे because it is close to 0. Clear? Now second mode was by quartiles, है ना. ये आपका कार्ल पियर्सन मेजर बोलते हैं इसको हम, कार्ल पियर्सन. Next is Bole. For Bole you need quartiles. अब हम यहाँ पे quartiles भी find कर लेते हैं. So first quartile Q1, I write first quartile. First quartile is equal to, function is quartile, or first select the range again. Then which quartile you need first? So you have to enter 1. Then enter. So this is first quartile. Then you need second quartile. Second quartile is nothing but the median. Second quartile. Right? Equal again quartile. Two. And third quartile.
So it is equal quartile three. अच्छा, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टाइल वैल्यूज आर, अच्छा मैंने टू इन किए थे, वैल्यू सेम है सेकेंड एंड थर्ड. Okay. Then find the first. We have to find Q3 plus Q1 minus 2 Q1. So it is 65 plus 55.25 minus 2 multiply 65. Okay. मैम वो 2Q2 नहीं होगा मैम वहाँ पे एब्सोल्यूट में बोले मेथड में Q3 plus Q1 minus 2Q2. हाँ Q2 यहाँ पे Q2 लिखना है. जस्ट अ मिनट, पहले इसको ठीक करते हैं. 2Q2 एंड यहाँ पर हम इक्वल का साइन नहीं लगाया है मैंने. ठीक है. Again it is showing negative, so negative skewness, and for relative we have this divide by Q3 minus Q1, right? So Q3 is 65 and Q1 is 55.25. So relative is coming to be -1. How it can be possible? 65 minus 5 point. अच्छा. Okay, same ही आ रहा है, -1. So here for the Bolles method is close to -1. Okay. Now next is by method of moments. Now you have to find the method of moment. For the method of moment you have to find, यहाँ पे mistake थी. आप लोगों ने पता नहीं कौन सा वो आउटपुट पेस्ट कर रखा था. So we take it as x, then write it x minus m or x minus x bar, x minus x bar भी लिख सकते हो और आप m भी यूज कर सकते हो, m for mean. X minus x bar, then x minus x bar square. Okay. Now here you put the value, this minus mean. What is mean? Average क्या निकाली है आपने, वो आप या तो सेल रेफरेंसेस करके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस कर दो या डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं. तो डायरेक्टली वैल्यू में डाल दी हूँ 62.9. The mistake is there. अच्छा, okay, bracket. आई, ठीक है. Now copy and paste. ठीक है. Then use the square function of this. पावर फंक्शन यूज कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो. This comma, you need square power. नहीं, you have need 3/3 power. x minus x bar क्यूब चाहिए ना आपको, इसको भी 3 करते हैं. For skewness we need x minus x bar power 3. Okay, so control copy
यहाँ तक कोई डाउट क्लास आपको? कितना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Then we find this sum of it. Find this sum equals sum just a minute. It should be negative, no? Hmm. Just a minute. बस क्यूनेस बहुत स्लाइड थी ना इसमें, थोड़ा सा इसमें वैल्यूज की एडजस्ट चेक इट, बिकॉज ये वाला सम जीरो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लेट्स टेक द मीन टू थर्ड डेसिमल प्लेस, देन व्हाट हैपेंस? 923। ठीक है, ये सम तो आपका जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। बट यहाँ पर क्योंकि स्क्यूनेस अगर नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पे सम नेगेटिव होना चाहिए, और ये आपका पॉजिटिव आ रहा है इस केस में। तो लेट्स चेक कहाँ प्रॉब्लम हुई है। मैम ये जब किया था तो पॉजिटिव ही आया था सम, पॉजिटिव ही आया था सम। आई थिंक, क्योंकि एक्चुअली काफी क्लोज हाँ, ना। बिकॉज एक्चुअली क्या है, स्क्यूनेस बहुत कम है। लेट्स स्क्यूनेस कम है तो इस वजह से मे बी, तो लेट बीटा वन चेक करते हैं, बीटा वन से पता चल जाएगा, क्योंकि स्क्यूनेस बहुत लेस है ना, जीरो उसके आसपास ही है आपकी, माइनस के। तो यहाँ पर जो क्यूब्स हैं, आई थिंक जो ग्रेटर वैल्यूज हैं उनका क्यूब ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि इसमें 65 आपका मीन 62 है और 65 वाली वैल्यूज ज़्यादा है। ठीक है ना, और ये बाई मॉडल डेटा है ना आपका, जो इसमें आपने ग्राफ बनाया था उसमें दो कर्व्स आ रहे थे ना इसके, बाई मॉडल आ रहा था ना ये।
ओके, तो ये आपका x माइनस एक्स बार क्यूब आ गया. देन यू फाइंड फर्स्ट mu3. mu3 is equal this value divided by n. तो टोटल ऑब्जर्वेशन ये कितनी है वो भी देख लेते हैं हम. टोटल ऑब्जर्वेशंस काउंट करके पता चल जाएगा. आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर या काउंट फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे काउंट आता है, काउंट 26. और अगर आपको काउंट करनी है तो आप काउंट भी यूज़ कर सकते हैं. इक्वल काउंट फंक्शन यूज़ करो. ये आपका काउंट फंक्शन आ गया. एंड आप 26. तो n आपका यहाँ पे 26 है. तो mu3 आपका आएगा 12,694.74 डिवाइड बाई 26. ठीक है, ये आपकी mu3 की वैल्यू आ गई. अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, थोड़ा सा मुझे इसमें डेटा में थोड़ा सा डाउट है. बिकॉज कार्ल पियर्सन से ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिवली स्क्यूड. और एक मिनट मैं देखती हूँ, आप लोगों ने कर्व डाला है ना, कर्व के हिसाब से ही कैसे शो कर रहा है डेटा. पॉजिटिव शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है. बाय कर्व तो आपका ये पॉजिटिव ही शोड है. मोर टेल टुवर्ड राइट आ रहा है ये, जो आपने कर्व फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया हुआ है ना. तो उसके हिसाब से ये मोर टुवर्ड्स राइट ही आ रहा है. चलो ठीक है, ये आपका mu3 आ गया. एंड देन यू नीड बीटा 1. तो बीटा 1 के लिए हमें क्या चाहिए? बीटा 1 इज mu3 स्क्वायर बाय mu2 क्यूब. एंड mu2 इज वेरियंस, तो हम यहाँ पे एक वेरियंस भी निकाल देते हैं. वैसे वेरियंस आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का ही स्क्वायर होता है. ये तो आप यहाँ पे वेरियंस ले लो. वेरियंस के लिए देयर इज अ फंक्शन इक्वल वेरियंस. ये आपका फर्स्ट आ गया, कैलकुलेट वेरियंस बेस्ड ऑन एंटायर पॉपुलेशन. वेरियंस फाइंड कर सकते हैं. So variance is 126.99. 2 डेसिमल प्लेस तक हम इसको ले लेते हैं. Now beta 1 is equal, इसका स्क्वायर करना है हमने mu3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय mu2 क्यूब. mu2 की वैल्यूज कितनी आई थी? 126.99 क्यूब. ठीक है, एंटर करेंगे तो ये आपका आता है कोफिशिएंट बीटा 1 0.11. सो अगेन इट इज क्लोज टू 0. ठीक है, सो देर इज नॉट मच स्क्यूनेस. तो अगर आप अपना कर्व देखोगे ना, जो आपने कर्व आउटपुट्स लगाए हैं, तो उसमें देखो ये ऑलमोस्ट सिमेट्री को है, बहुत ज्यादा राइट को टिल्टेड नहीं है. राइट को है बट बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, स्क्यूनेस समझ में आ गया आप लोगों को?